Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. So this is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक तथा शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। हम उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ गोपाल कृष्ण अग्रवाल। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है गौरव। Thank you, Nikhil, and welcome, sir, to the program. A quick look at the headlines. Domestic stocks witnessed modest losses. Sensex closes below 61,100 points. Nifty settles below the 18,200 level. Rupee logs robust gain of 48 paise to finish at 81 rupees and 43 paise against the US dollar. And Brent crude declines below $95 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 61,100 और निफ्टी 18,200 अंक के स्तर से नीचे बंद हुए। डॉलर की तुलना में रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 43 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत गिरकर $95 प्रति बैरल के आसपास। सेंसेक्स और निफ्टी में आज मामूली गिरावट देखने को मिली। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच दोनों सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 61,100 से नीचे और निफ्टी 18,200 के नीचे आकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.25% की मंदी से 152 अंक गिरकर 61,034 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.25% कम होकर 46 अंक लुढ़का और 18,157 पर पहुंच गया। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.52% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.33% गिरावट में रहे। The Sensex and the Nifty today witnessed modest losses. Both indices declined amid mixed cues from global share markets. The Sensex closed below 61,100 points, while the Nifty settled below the 18,200 level. The Sensex fell 152 points or 0.25% to finish at 61,034. The Nifty also slipped 46 points or 0.25% to end at 18,157. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.52%, while the small-cap index ended 0.33% lower. In the Sensex Pack, 8 companies posted gains, while 22 logged losses. ITC was the top gainer as it added 2%, followed by Dr. Reddy's Lab, which surged 1.2%. Kotak Bank added 0.7% and HCL Tech ended 0.6% up. On the other hand, Power Grid declined 4.1%. Tech Mahindra fell 2.3%. Sun Pharma slipped 1.5% and Bajaj Finserv ended 1.4% down. In sectoral indices at the BSE, 3 sectors logged gains, 15 logged losses, while 2 sectors ended flat. The services sector climbed 1.5%. FMCG and BankX, both indices gained 0.2% each. On the other side, the realty index declined 1.4% and capital goods and consumer durables both slipped 1% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,683 companies gained, while 1,837 fell. Shares of 114 companies remained unchanged. Gopalji, again a mixed day for different shares. Turbulent market started very well. We touched an intraday high, all-time high at the Sensex, but ended marginally lower. So do you think there's strength in the market? Definitely, if you look into the FII investment, continuously in the November month, they are pushing money into the Indian markets. Though domestic institutions are selling now, but FII investment and flow to the market shows that there is a strength and they have a positive outlook for the markets at present.
That's wonderful. So we also have our market expert, Mr. Avinash Gorak Shakar on the line, and we'd like to take his inputs too. Avinash, sir, welcome to the program. Yeah, good evening. Sir, can you hear us? Yeah, I can hear you. Good evening. Avinash, sir? Yes, sir. So what are your views on the market? How do you see the market's movement today and in an intraday high, all-time high? I think, I would believe that today the market witnessed a little bit of profit booking ahead of the US, midterm elections. Since, both the Democrats and the Republicans are going neck to neck, the markets were volatile, and obviously once the results come out, you could see the US markets again rallying up, and that would obviously have a positive impact on the Indian equity markets. More importantly, FI flows have been very strong. In fact, in the last 1.5 months, FI inflows have actually resulted in a very big mood change for the Indian equity market, and we believe this will continue, considering the fact that most FIs are now of the belief that the interest rate cycle is going to peak out sometime in January, and obviously future further rate hikes in US may not be very significant. And obviously that means that a lot of money will come to India because growth in the Indian markets is going to be much more stronger, and the Indian economy is positioned to grow much better than other global markets like the European or the US economy. So keeping these factors, I think the markets would continue to rise. One more thing which I would like to add is that the markets are now also discounting the coming budget, which is going to be a budget just ahead of the general elections. So that factor will keep the market mood also positive. And I believe till the budget, the market mood will continue to be buy on declines, and any dip will be used by investors to actually accumulate stocks. So, do you feel that, in this volatile market, the mid-cap and small-cap are doing, compared with the large caps? Do you think that they are at par, or there is strength in a particular sector? Yeah, I think, frankly, the mid-cap stocks segment has been doing very well because here, the supply side issue continues. There are many mid-cap companies which are doing very well, but their liquidity is a problem, and where most of the HNI, the PMS, kind of providers are actually taking positions initially. But overall, I think, sectors which the markets are liking are typically the auto sector, auto components, capital goods, companies which are largely doing very good on the export side, especially auto components, pharma companies. So I think these companies will definitely, get a much better kind of a valuation comfort in the current scenario. Obviously, sectors like metals, oil and gas are sectors which probably would be avoided. And to add to it, I think the banking sector is one of the major reasons, investors are actually looking at a very strong market, because banking has outperformed the market in a very significant way, both from the private sector bank as well as the PSU bank. So when we look at the trend we have been seeing in the past couple of months also, India has been bucking the trend in terms of, the market is getting stronger, people are buying, people are investing, and there is an expected Fed rate hike at the end of December. So do you think we've already built that in and we'll continue to maintain this strength, and the FIIs have also somewhere catered for this? Yeah, I think clearly, as I mentioned to you earlier, that markets have more or less started discounting the fact that interest rate cycle has more or less peaked out, and maybe in the next 2 months or 3 months, inflation will also start softening, and that would be a key trigger point, and that is the key reason we are seeing a lot of preempting buying done by the FIs in the Indian, capital markets. Most importantly, I would believe that, corporate numbers which have come out in Q2 have been significantly better than market expectations. Very little negative surprises have come in, and that also has added a lot of confidence to the investors. जी अविनाश जी, एक बात और यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि यूएस फेड इंटरेस्ट हाइक के बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे, और ये डोमेस्टिक स्टॉक्स पर किस तरह का इनका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पहली बात तो यूएस में, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि अभी जो करंट 70 बेसिस पॉइंट गवर्नर पॉवेल साहब ने कहा है कि आगे चल के वो इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी देखेंगे, और ऑब्वियसली आगे के जो इंटरेस्ट रेट हाइक वो हो सकता है कि मॉडरेट हो, यानी आने वाले 2 महीने में दिसंबर और जनवरी में ये 50 बेसिस पॉइंट हो, लेकिन जनवरी के बाद ऐसा अनुमान सभी को लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना मुश्किल वाली बात होगी और इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट होंगे, और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी अगर थोड़ा ठंडा होता है जी फायदा मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी आरबीआई फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेगा। तो डेफिनेटली इन द नियर टर्म ये थोड़े फैक्टर्स वेट एंड वॉच करने लायक है, बट
कि इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट हो चुका है। ऐसी तमाम चुनौतियों के बीच में कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि भारतीय बाजार जो है वो हर तरह की स्थिति का सामना करने में सक्षम है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे बाजार अभी ऑब्वियसली ग्लोबली इंटरलिंक्ड है। जो यूएस में होता है उसका इम्पैक्ट हमको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलता है, लेकिन जब तक एफआईआई की लिक्विडिटी आती है और जब तक एफआईआई का फ्लो पॉजिटिव रहता है, तब तक मुझे लगता है कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज होगा। बाजार यहाँ पे मोरलेस डिपेंडेंट रहते हैं कि एफआईआई इंडियन मार्केट्स में कितना पैसा निवेश करते हैं। पिछले 1.5 महीने में काफी बड़ी मात्रा में एफआईआई ने पैसा लगाया, तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आगे अगर बाजार को चलना है तो एफआईआई तो बाइंग करना जरूरी है। अगर इनके यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत रुकावट या स्लो डाउन आ गया तो वापस बाजार में थोड़ी बहुत एक स्लो डाउन या थोड़ा पैनिक सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। So coming now to our retail investors, a lot of our listeners, and actually they say that, the stock market now is not for the faint-hearted, because, now it's doing strong. Of course, market is strong, but some shares which were bought earlier, good shares also have still not moved up. So the retail investor is a little confused. Any suggestions for them? See, basically, what is important is that in today's market, as you have rightly pointed out, that you need to be well read and you need to have a good financial advisor. Because, without properly researching the company, without properly understanding the company, a retail investor may make a, kind of a significant loss. So I think there are lots of opportunities across sectors, and investors who are not directly managing to buy direct equities, they can opt for the mutual fund route, or maybe they can do an SIP regularly, which can obviously help them generate a lot of wealth from the Indian equity market. But it's definitely a long-term asset class, so that is something which they need to keep in mind. Mr. Gorakh sir, thank you so much for joining us. We'd like to remind our listeners that we have in our studio an expert, Sri Gopal Krishna Agarwal, senior economist, and we shall take a short break and join all of us again shortly. Stay with us. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मार्केट मंत्र में एक बार फिर से। एशियाई बाजार पर नजर डालें तो चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के मद्देनजर अमेरिकी शेयर बाजारों और निवेशकों की चिंताओं के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.1% लाभ में रहा। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम सूचकांक 0.6% ऊपर आकर बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग 1.2% नुकसान में रहा। जापान के निक्केई में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.5% लुढ़क गया। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान मिला जुला असर रहा। जर्मनी का डेक्स 0.5% चढ़ा, जबकि फ्रांस का कैक और लंदन का फुट्सी 100 0.2% की नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। गोपाल जी, एशियाई बाजारों पर अभी हमने नजर डाली, जाना हमने क्या हुआ, इसके बारे में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर इसका किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, हमारे जो मार्केट्स हैं वो यूरोपियन और ये जो है यूएस मार्केट के साथ ज्यादा अलाइंड है, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहां से आता है और उनके अनुसार वो चलता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारे मार्केट डीकपल हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से। कई बार ट्रेंड आज भी आपने देखा, इंटरनेशनल ट्रेंड अलग चलता है और हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेंड अलग चलता है। तो हमारी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इकोनॉमिक लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग और अदर इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस ग्लोबल लेवल पे काफी अच्छी हो रही है। ग्लोबल लेवल पे रिसेशन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाइक हो रहे हैं, वहां पे कई तरह के प्रोटेक्शनिज्म के इश्यूज आ रहे हैं। यूरोपियन इकोनॉमी को देखेंगे तो ऑयल वगैरह गैस के कारण तो वो बिल्कुल ही जर्मन, यूरोप, अमेरिका, ये जो यूके वगैरह एकदम काफी मुश्किल के हालात में। लेकिन उसके बाद अगर पोस्ट कोविड इंडिया का मार्केट कम से कम अगर देखते हैं तो केवल मार्केट की बात नहीं है, पूरी इकोनॉमी जो है आज के समय में भारत विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है जी। और आने वाले समय में भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया की इकोनॉमी बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी रहेगी। 5th लेवल पे हम आ गए और जल्दी ही जर्मन जो कि 3.7
बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, उसको तो हम जल्दी ही क्रॉस कर लेंगे। और जापान भी 4.2 बिलियन डॉलर की जो ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमी है, वह भी हम आने वाले समय में उसको पार करके तीसरे लेवल पे हम जल्दी आ जाएंगे। Right. So, sir, you're talking about the Indian industry, and we are strong in many areas. And we also know that now for us to reach that next level, there will be certain sectoral pushes. So how do you see the sectoral areas in the industry moving up? If you see in last couple of days, the automobile sector result of those companies and their sale figures have shown a very high growth. So automobile is one sector and its component that are driving India's growth, and that is an important success story. Second, if you see our banking sector, today also the market has shown that the banking sector has performed very well, particularly PSUs. So over the last 7 or 8 years, the strength of our banking sector has improved a lot because of the insolvency, bankruptcy code, solution of non-performing assets, and government has also capitalized. Right. So if you look into the banking sector, it gives the strength to the whole economy. So what our about credit offtake is also improved. Right, sir. So when we talk about the banking manufacturer, MSMEs are playing a huge role in supporting these sectors also? Yeah, the manufacturing sector, particularly MSME sector, is being supported by the government through the investment into the infrastructure. The level at which infrastructure is being built by the government on road, railways, airways, waterways, that is creating good demand to the giving to the manufacturing sector. And second thing is the government support on PLI scheme is also an important area. So the government has also opened up its defense sector for manufacturing of the MSME sector for domestic industries. So these are driving growth. But if you look into the stock market, our mid cap and small cap are not performing that way in the market. That is because the market index is being driven by the large cap companies. Okay, right. गोपाल जी, एक बात और यहाँ पर पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का हम बात कर रहे हैं और इस देश में एमएसएमई की बात कर रहे हैं, जहां तक भारत की बात है, भारत ने सेमीकंडक्टर के फील्ड में एक नया इनिशिएटिव लिया है, तेजी से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हमारा जो कोयला उत्पादन है ये भी अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन दोनों को कैसे जोड़कर देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दो चैलेंजेस भारत में बहुत ज्यादा थे, वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ये है, दूसरा है सप्लाई चेन के इंटीग्रेशन की बात। इन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण पहल सरकार ने की है। एक तो आप सेमीकंडक्टर की हमारी आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनी में, और इवन ऑटोमोबाइल जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की और सप्लाई की एक बॉटलनेक थी, उसके लिए सरकार ने काफी इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, और चिप मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने का भी सरकार काम कर रही है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है जी, और उसके लिए चाहे हम रशियन ऑयल के इंपोर्ट की बात कर रहे हैं या फिर ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है, सोलर पावर के ऊपर सरकार ने बहुत फोकस किया है, और अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी अभी इस वक्त लेटेस्ट बहुत सरकार इसके ऊपर भी प्रयास कर रही है। तो सोलर पावर और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, इसके कॉम्बिनेशन से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो आज हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो भी होता है, वह भी हमारा बचेगा, और हम ग्लोबल जो फ्लक्चुएशंस हैं क्रूड ऑयल के, उससे हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सस्टेन करने में बेटर सपोर्ट कर पाएंगे। राइट। सो द डिफेंस सेक्टर प्रोस्पेक्ट्स, आपने हल्का सा यू मेंशन दैट अर्लियर, सो समथिंग मोर ऑन दैट? See, the government has announced that 65% of our defense requirement over the next several years will be reserved for domestic production. Okay, that's a good number. That's a very big thing. And the government has also started 2 defense corridors. One is passing through Uttar Pradesh and second is in South. So in this defense production manufacturing sector, lot of MSMEs are coming to get an assured market from the government for defense supplies. So that is giving a good boost to the defense sector, and even large companies. Recently we have seen the success story of Tejas, domestically light combat
aircraft that is being demanded by many countries. NASA in air space, and that is also giving a big boost to the whole space sector in the country's ecosystem. And recently, Tata and Airbus did a pact for C-295 aircraft manufacture. So that also, so it's a big company, and I think it's a huge, retaining of trust in Indian manufacturing. Yes. Right. और साथ में एक बात यहाँ पर और जोड़ना चाहेंगे कि आजकल स्टार्टअप्स को भी सरकार काफी बढ़ावा दे रही है इन फील्ड्स में काम करने के लिए. तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अगर आप स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम देखेंगे तो भारत में इस वक्त 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स है, पर्टिकुलरली फिनटेक में. तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का पूरा डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में पेमेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने का जो सक्सेस स्टोरी है, यूपीआई की, #99 का, और जो सेटलमेंट और क्लियरिंग सिस्टम के अंदर जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो इनिशिएटिव हो रहा है, वो उस तरह का ग्लोबल लेवल पे कहीं कोई ऐसा इनिशिएटिव और दिखता नहीं है. 5G वाले स्पेक्ट्रम में भी भारत पहल कर रहा है, और हमारे देश में 6,25,000 ग्रामीण गांव हैं, उनको सरकार ने इंटरनेट के साथ कनेक्शंस का एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं. तो इसके कारण जो पेमेंट सिस्टम का पेनिट्रेशन है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है. अब रुपए पे नजर डालें तो विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 48 पैसे मजबूत हुआ. रुपया 81 रुपए 43 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.22% बढ़कर 109.88 पर कारोबार कर रहा था. गोपाल जी, रुपए पर आज हमने बात की. रुपया काफी टाइम बाद हमने ये देखा कि अप हुआ है, 48 पैसे मजबूत हुआ. एक बड़ी खबर है ये. बिल्कुल. पीछे क्या था कि आरबीआई ने बहुत पंप किया था लिक्विडिटी को सक करने के लिए मार्केट में, और जो फॉलिंग रुपी को थोड़ा मार्केट फोर्सेस में सपोर्ट करने के लिए काम किया. तो वो पूरा इनिशिएटिव का एक रिजल्ट भी है कि आज लगभग 46-47 पैसे रुपए एप्रिशिएट हुआ. और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आज मुझे लगता है कि एक पीआईबी का जो गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट है, उसने रुपए को बहुत सपोर्ट किया. कि गवर्नमेंट ने आज अनाउंस कर दिया है कि हम लोग बायलैटरल ट्रेड को रुपी ट्रेड में अंदर सेटल करेंगे. आज के समय में डॉलर की रिक्वायरमेंट और डॉलर की डिमांड इसलिए थी कि ग्लोबल ट्रेड्स जो मल्टीलैटरल या बायलैटरल ट्रेड होते थे, उनको ग्लोबल बैंकिंग सेंट्रल सिस्टम्स को रुपए के वो डॉलर के अंदर सेटलमेंट करना पड़ता था. लेकिन अब सरकार ने आज अनाउंस किया है कि हम लोग बायलैटरल ट्रेड को रुपी डिनोमिनेशन में सेटल करेंगे. तो अगर हम किसी गल्फ कंट्रीज से कुछ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ पेमेंट और रिसीव करना डॉलर की बजाय हम रुपए के अंदर उसको सेटल कर पाएंगे. तो जो रुपए का एप्रिसिएशन हुआ है, मुझे लगता है कि वह न्यूज का भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है. बहुत सारा जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड पर्टिकुलरली कुछ कंट्रीज के साथ, वो रुपी डिनोमिनेशन में होने से हमारी डॉलर पे डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगी. और ये एक बहुत मजबूत होगा अनाउंसमेंट है, जिसके कारण मुझे लगता है कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है वो अच्छा बढ़ेगा. एंड डू यू ऑल्सो फील दैट वी आर नॉट आर्टिफिशियली ट्राइंग टू मेंटेन द रुपी एट अ पर्टिकुलर लेवल? वी आर लेटिंग इट फाइंड इट्स नेचुरल बैलेंस, so that will also in some way strengthen maybe not the rupee as such, but the exchange in the currency. Definitely, what happens in international trades and exchange mechanism is that if you do not think of only falling rupee or support of strengthening of dollar, so you have to look into the rupee fall or gain in relation to other currencies also. Right. If you do not take care of the depreciation or appreciation in other currency except dollar, then you may lose some of the global trade in other countries. Right. So RBI looks into balancing the rupee dollar versus rupee other currencies, whether it is pound or whether it is yuan or whether it is Japanese currency. So it has to be balanced. It's a balancing RBI act, absolutely. Balanced approach. Right. It is not looking only at rupee dollar appreciation, depreciation, and that gives the strength to our trade import export. Right, sir. We'll have a quick look at the US market. Wall Street ended higher yesterday during voting in midterm elections that will determine control of the US Congress
It was the third straight day of gains. The Nasdaq Composite gained 1%, S&P 500 rose 0.6%, and the Dow Jones Industrial Average Index added 0.5%. In oil prices today slipped after industry data showed that U.S. crude stockpiles rose more than expected and on concerns that a rebound in COVID-19 cases in top importer China would hurt fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $88.20 per barrel, while WTI crude prices were at $94.70 per barrel. So your view on the oil prices and their movement? This global oil prices is a challenge for the country. One of the bottleneck that many of our industries, or particularly oil manufacturing, oil marketing company, OMCs, are facing, that global oil prices had successively increased to a very high level, and the domestic prices were not increased in consonant with the international price. So they were losing lot of money. So this challenge is definitely there, but slowly global crude oil prices are coming down, except diesel. The petrol prices has come down. Even the gas prices at international level has come down. So the oil marketing companies are at present slightly in a better position, except their distribution mechanism through the diesel prices. So this is one thing that is important, and as the crude oil at a global level falls below $90 per barrel, our oil requirement will substantially see a better supply. Right. और सोने पर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध के सोने का वायदा मूल्य 165 रुपए घटकर 51,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 225 रुपए टूटकर 61,735 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,711.70 प्रति ऑन्स, जबकि चांदी गिरावट के साथ $21.40 पर कारोबार कर रही थी। दोनों मेटल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे गोपाल जी? देखिए, जो गोल्ड और सिल्वर है उसकी रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत इंपोर्ट होती है, क्योंकि हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री काफी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है, और इसमें ग्लोबल लेवल पे हमें जो इंपोर्ट करना पड़ता है, इसके लिए ये बहुत लार्ज पार्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट इसमें से गोल्ड और सिल्वर की हम इंपोर्ट करते हैं। उसके फ्लक्चुएशन से जरूर इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जो ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल लेवल पे ये चल रहा है। अदर मेटल्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि अदर जो बाकी बेस मेटल्स हैं, स्टील, निकल, एल्यूमिनियम, इनकी जो प्राइजेज हैं, इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को काफी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए हमारे लिए रॉ मटेरियल के रूप में। राइट। इंडस्ट्री से डोमेस्टिक की तरफ आते हैं। सो वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड दैट गोल्ड इज समथिंग व्हिच इज प्रेशियस, एंड ट्रेडिशनली गोल्ड एस्पिरेशनल एक मेटल है, एंड वेदर इट्स विच एवर हाउस, व्हाटएवर इनकम ग्रुप, गोल्ड को हम इकट्ठा करना चाहते हैं। आपको लगता है ये फितरत बदल रही है? नहीं, देखिए, जैसे जैसे हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स खुलते जा रहे हैं, कैपिटल मार्केट में आज हम 10 करोड़ से ऊपर हमारे जो है इन्वेस्टर बेस डीमैट अकाउंट में खुल गया है, और हमारे इक्विटी मार्केट्स में काफी इन्वेस्टमेंट लोगों को आता है। सरकार बॉन्ड मार्केट को भी और डेट मार्केट को भी काफी इंप्रूवमेंट करके खोल रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी हैं। एसेट क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। पीछे रियल एस्टेट काफी पुअर परफॉर्म कर रहा था, इसलिए लोग गोल्ड के ऊपर एज ए इन्वेस्टमेंट क्लास ज्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन अब रियल एस्टेट भी इंप्रूव हो रहा है। राइट। गोपाल जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Gopalji. Before we close, a quick look at the headlines once again. Domestic stocks witnessed modest losses. Sensex closes below 61,100 points. Nifty settles below 18,200 level. Rupee logs robust gains of 48 paise to finish at 81 rupees and 43 paise against the US dollar. And Brent crude declines below $95 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.